है वो ऑक्सफोर्ड में भी आती है, पॉपुलर में भी आती है और माइक्रो। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स cell wall is absent. Very important point. In case of animals, cell wall is absent. And is known as living in nature. Protoplasm known as living in nature. And first of all, please underline the line. First of all, observed by Hardin. First of all, observed by Hardin or NEET CRASH. According to Huxley, Huxley, according to Huxley, protoplasm is known as physical basis of life. Please underline it. According to Huxley, Huxley, protoplasm is known as physical basis of life. The term protoplasm was given by Purkinje. Very important question. The term protoplasm, first of all given by Purkinje in the year 1894. और जब उन्होंने सबसे पहले इसको का नाम दिया तो ये हमें सबसे पहले कहाँ पे मिला? इट इज फाउंड इन यंग एनिमल एम्ब्रियो. It is found in young animal embryo. The most important constituent of protoplasm is water. 75 to 80% होता है बच्चा. Water, that is 75 to 80%. बाकी उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, मिनरल सॉल्ट्स आते हैं. प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल सॉल्ट्स. अब अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स का बिल्कुल ब्रीफ में थोड़ा सा पॉइंट आता है. पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहली सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट इन आरबी. इट इज फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑफ आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं. And partially developed in sperms and all the old cells. Partially developed in sperms and all the cells. They are totally absent in prokaryotes. अगली लाइन बच्चा सारी अंडरलाइन करो. Endoplasmic reticulum forms more than 50% of total cell membrane. Endoplasmic reticulum forms more than 50% of total cell membrane. It consists of cisternally
vesicles and tubules. It consists of cisternae, vesicles and tubules, and mainly of two types. First is rough endoplasmic reticulum. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ग्लैंडुलर होता है और ये राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, याद रखना इट इज ग्लैंडुलर, इट इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ राइबोसोम्स। और ह्यूमन बीइंग्स में जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक सेल्स, प्लीज अंडरलाइन इट, पैंक्रियाटिक लिवर सेल्स, क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं। फैटी लिवर तभी होता है। पैंक्रियाटिक लिवर सेल्स as they form proteins, और में ये राइबोसोम्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं कुछ भी होता, but they are associated with lipids, cholesterol, smooth endoplasmic reticulum is associated with lipids, cholesterol and steroid synthesis lipids, cholesterol and steroid synthesis, and it is found in testes. It is found in testes. It is found in WBCs. Found in WBCs. Glycogen storing cells of liver. Glycogen storing cells of liver. And it helps in detoxification. अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, मसल सेल्स आर रिच इन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स आर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसीलिए इनको वहां पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। उसके बाद आ गया गोल्जी बॉडीज। प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को डिप्टियोसोम्स कहा जाता है, DICTYOSOMS। प्लांट्स में इनको डिप्टियोसोम्स कहा जाता है और they are known as the traffic police of cells. Please underline it. पहले सुना है या नहीं मुझे नहीं पता पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। They are known as traffic police of cells. First of all, observed by Camilo Golgi. First of all, observed by Camilo Golgi in the nerve cells of, in the cytoplasm of Camilo Golgi in the cytoplasm of nerve cells of owls. Camilo Golgi in the cytoplasm of nerve cells of owls and cats. Nerve cells of owls and cats.
हाँ जी बच्चा। तो सबसे पहले ये आउल्स और कैट्स के नर्व सेल्स में जो है वो पाए जो हमारे पास ये गॉल्जी बॉडी एंड दे आर फाउंड इन द सेलिब्री ग्लैंड्स they are found in the salivary glands of humans but are totally absent in mature RBCs, sperms and eggs. But are totally absent in mature RBCs, sperms, mature RBCs, sperms and eggs. They are totally absent in all the prokaryotic cells. उसके बाद आगे प्लास्टिड्स। अब मजेदार बात है अगर हमारे में प्लास्टिक्स होते तो कितना मजा आता है। हमारी एक आम ग्रीन होती है, ब्राउन होती, आधे पर्पल होते, आधे ब्लैक होते, और पेंटिंग शेडिंग होती है। बट अफसोस plastids are only present in plants and totally absent in animals. Plastids are totally absent in animals and they are only present in plants. Term plastid first of all given by Ernest Haeckel, जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी थी और जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ प्रोटिस्टा। याद रखें। अर्नेस्ट हीकल। प्लास्टिड जो है वो 3 तरह के होते हैं जतिन, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। CARETO कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। और जो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स बच्चा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? पेटल्स में और फ्रूट्स में। पेटल्स एंड फ्रूट्स। Leucoplasts are known as the largest colorless plastids. Please underline it. ये colorless है। क्रोमोप्लास्ट में क्या कैरोटीनॉइड के कारण रेड होगा, ठीक है? तो ल्यूकोप्लास्ट आर नोन एज द लार्जेस्ट colorless plastids, whereas chloroplasts are known as the kitchen cells. ये सारी सब्जियां सब कुछ इसी से। Chloroplasts are known as the kitchen cells and it is known as the largest cell organelle. जो क्लोरोप्लास्ट है कि जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है तो प्लास्टिड्स में हमने बड़ा पाया ना, but chloroplast is known as the largest cell organelle and the universal pigment chlorophyll is present in it. Universal pigment से आया हुआ है। उसमें कंफ्यूजन क्या है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो लार्जेस्ट कलरलेस प्लास्ट ये है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिक का। ये डिफरेंस है बच्चा, इसको याद रखो क्योंकि कंफ्यूजन के टाइम पे मुझे पता चल जाता है कहां पे कंफ्यूजन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। Name mitochondria given by Benda, Benda, Benda in the year 1888. Mitochondria given by Benda in 1888.
It is known as the powerhouse of cell. It is known as the powerhouse of cell. इसमें ATP एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल पाया जाता है। और मेरे बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, मैंने आपको एड्स में बताया था कि 5 lakh mitochondria are present in the flight muscles of birds. 5 lakh mitochondria, पहले आपके साथ बात की थी, 5 lakh mitochondria are present in the flight muscles of birds. अब ये तो नंबर बताया ना, अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन यीस्ट, जो कि नम पंचाई में आता है। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन यीस्ट. It is 1 to 3 micron meter. It is 1 to 3 micron meter, whereas the largest mitochondria, is found in oocytes egg. Is found in oocytes of amphibians. Amphibians में कौन सा? राना टिग्रीना frog. Largest mitochondria is found in oocytes of amphibians. Its size is 40 micron meter. Its size is 40 micron meter. जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है एस्टिकेट्स का, सबसे मेन है बनाना कि कितना आता है, फिर ग्लूकोज हो जाता है, फिर सेरामिक। ठीक है बच्चा? तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम्स. अब फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, they are found in chondrosomes, chondriosomos. They are found in flight muscles of insects. They are found in flight muscles of insects, where they are called as sarcosomes. Flight muscles of insects, where they are called as sarcosomes. उसके बाद हमारे पास आते हैं लाइसोसोम्स. Lysosomes are also called as suicidal bags. Lysosomes also called as suicidal bags, as they contain hydrolytic digestive enzymes. आपका कल का टेस्ट में जो आपको 5 असाइनमेंट्स पहुंच चुकी है, उसमें से ही होगा 90 क्वेश्चंस में जो 5 hydrolytic digestive enzymes, and that enzyme is called as acid hydrolysis. और इस एसिड हाइड्रोलिसिस में बच्चा कलेक्टिवली 40 एंजाइम साथ में प्रेजेंट होते, तभी सुसाइडल बैग है. ठीक है बच्चा? जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, एटलीस्ट 40 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इट, अपनी एसोसिएशन दे रही है. एंड द मेन एंजाइम्स आर प्रोटीएज, लाइपेज, protease, lipase, and phosphatase. Protease, lipase, and phosphatase. उसके बाद आ गया राइबोसोम्स.
They are rich in ribonucleic acid in the form of granules. They are rich in ribonucleic acid in the form of granules. Ribosomes are known as the protein factories. They are found in free cytoplasm in eukaryotic cells. पर ये हमारे पास अकेली ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस है. They are found in free cytoplasm of eukaryotic cells. They are absent in mature RBCs and sperms. They are absent in mature RBCs and sperms. अब अगली लाइन अंडरलाइन करो. Ribosomes are known as the smallest cell organelle. Chloroplast largest और ये smallest. उसके बाद आ गया centriole, also called as centrosphere, also called as centrosphere. Centriole is the membraneless structure. Please underline it. Membrane नहीं होती इसमें. Centriole is the membraneless structure. और जो centriole है बच्चा, ये mostly pairs में present होते हैं. That is why they are called as diplosomes. पहले नहीं सुना, अब ये सुना. They mostly occur in pairs, so called as diplosomes. Centriole is the only cell organelle that can replicate. पर इसमें डीएनए नहीं होता. तो रेप्लिकेशन कहाँ होती है? इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल. Centriole is the only cell organelle that can replicate but has no DNA, but it replicates in the interface of cell cycle. अब सेंट्रियोल का मेन रोल क्या होता है प्राची? What is the main role of centriole? बोलो प्राची. किस चीज की डिवीजन में हेल्प करता है प्राची? बोलो. सेंट्रियोल का क्या मेन रोल है? मनस्वी आसपास हो, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे. व्हाट्स योर नेम बच्चा? अपनी. सेल डिवीजन ऑफ एनिमल्स, सेल डिवीजन ऑफ एनिमल्स में आसपास के बच्चे सारे आप आसपास तो जो मेरा पॉइंट है. अब मैंने मनस्वी के बारे में बताना तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, बाकी तो ये इस क्लास में पढ़ती है ऐसा है वैसा है सब कुछ. संजीवनी सब कुछ है, सब चल रही है पास हर पास. Gaten, it is very important question. What is the main role of centriole?
सारा कुछ बता रहे हो, सब कुछ सही है, मैं सब कुछ सही मानती हूँ, पर मेरा पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ, जो नीट आपको लेके जाए वो पॉइंट बताओ। Centriole helps in the formation of spindle during cell division. Spindle formation करता है, this is the main role. Centriole जो है वो spindle formation करता है बच्चा, यही तो सबसे important point है, और पॉइंट तो बाद में हमारे पास आएंगे, सबसे important यही आएंगे। आप सही कह रहे हो, क्रोमोसोम्स चार इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज राइट, बट माय पॉइंट रिगार्डिंग योर नीड एज नीड एक्सपर्ट आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन है अर्जुन की जो वो चिड़िया की आंख वाला काम, पेड़ पे कोई कहते हैं पेड़ पे फूस लगे हैं, पेड़ पे पत्ते लगे हुए, चिड़िया बैठी है, पर अर्जुन का निशाना क्या है, चिड़िया की आंख। वही आपका है कि जो सेंट्रियोल है, इट्स मेन रोल इज टू फॉर्म स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपका जो टेस्ट है आपको फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, वो तीनों तीनों टॉपिक्स मुझे पता नहीं कब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारे पास दो बॉडी के दो वेरी, तो फ्राइडे, सैटरडे और मंडे। So what is the composition of rice? What is the composition of rice? बिल्कुल सही बोला, पर पॉइंट कहाँ पे किया आपका आंसर 100। One molecule of glycerol and 3 fatty acids. Shabash. 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol. What is the chemical nature of enzymes? Chemical nature पूछ रही हूँ। What is the chemical nature of enzymes? आओ आसपास में। Shabash. Enzymes are made up of proteins. Very good. Excellent. इससे लग रहा है कि +1 कंडीशन that's good. क्योंकि 60% +1 आपको पता नहीं, और वहां पे पहला पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि +1 को छोड़े हुए यहाँ enzymes are made up of proteins. उसके बाद who proposed lock and key hypothesis? Again very important question. Who proposed lock and key hypothesis? Who proposed lock and key hypothesis? Fisher, Fischer, in the year 1894. Fisher in the year 1894. Name the amino acid involved in urea cycle. Name the amino acid used in urea cycle.
और आपने मेरे को बताना इसमें कौन से नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है और कौन सा प्रोटीन अमीनो एसिड। नेम द अमीनो एसिड्स, नॉट एसिड्स, एसिड नहीं है एसिड्स। नेम द अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, और इसमें कौन से नॉन प्रोटीन है और कौन सा प्रोटीन अमीनो एसिड। अच्छे और सेकंड का प्रोग्राम 12 से 14। अब मैं बताओगे ornithine and citrulline, they are non-protein amino acids and aspartic acid is protein amino acid. सबसे important ornithine, aspartic acid आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बनाया है। प्रोटीन अमीनो एसिड next which homosaccharide is called as animal starch, which homopolysaccharide is called as animal starch। शाबाश, ग्लाइकोजन। आपका एक है एमबीबीएस बच्चा, बहुत बड़ा एक बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लास्ट अटेम्प्ट ट्रायल मेथड, फिर अगर ट्रायल मेथड पे गए तो नेक्स्ट ईयर पेड सीट तो आपको 1.5 करोड़ पहले का फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट लेके चलो और इसी को आप क्लियर कर जाओगे। अगर आपने तो लाइक नहीं किया तो पूरा साल घर वाले खाना आपको जितनी कोशिश है 12 to 14 आवर्स 16 आवर्स, क्योंकि इसके बाद 4 महीने इतने देते हो कि दिमाग भी घूमेगा तो करेगा। 16 आवर्स लो, हाइबरनेट कर दो, फ्रेंड सर्कल को काटा लगा दो और मोबाइल को बंद कर दो और मोबाइल सारे दिन में 1 घंटा थोड़ी काम नॉलेज वाली बात, अदरवाइज आप सारा छोड़ दो। अगर तो नीट हो कॉम्पिटिशन स्कूल का जो बच्चे 720 वो स्पेशल वो वही चक्की काट रहे हैं, तो छोड़ दो कि तैयार होना है नहीं होना है। जो नीट के बच्चे होते हैं तैयारी तो बच्चा, अगर आपका बच्चा एम है बस वो ट्रैक करो, आप ही करोगे बाहर से। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेम वन हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये फंजाई के मेंबर्स। नेम वन हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जो नहीं समझ आ रहा मैं, दैट इज काइटिन। That is chitin. What glucose is known as non-reducing sugar.
इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं। और ये जो हमारे पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, ये हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, which biomolecule is present in milk sugar? Lactose. Which biomolecule is present in milk sugar? That is lactose. Next. In fats, except fatty acids, which biomolecule is present? In fats, except fatty acids, which biomolecule is present? That is glycerol. Which mineral deficiency causes goiter in humans? Which mineral deficiency causes goiter in humans? Iodine. Iodine. Name two steroid hormones. Estrogen and testosterone. Two steroid hormones. Estrogen and testosterone. Name three essential amino acids. Leucine, 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 essential amino acids. Second is lysine, Lysine. First is leucine, second is lysine, third is phenylalanine. Next, what is high boiling point? Why does water have high boiling point? क्योंकि different water molecules are interlinked with hydrogen bonds. Different water molecules interlinked by hydrogen bonds. Next, which enzyme converts which enzyme converts glucose into ethyl alcohol? Which enzyme converts glucose into ethyl alcohol? शाबाश, excellent. पंजाबी में आपने किया हुआ है. Zymase, ZYMASE. Next, what are peptide bonds? Shabash. The bonds which interlink the amino acids. The bonds which interlink the amino acids, and they are formed by dehydration synthesis. And they are formed by dehydration synthesis. Next, give technical word for acid soluble and acid insoluble fraction. Give technical word
फॉर एसिड सॉल्युबल के लिए तो हम सीधा कहेंगे फिल्ट्रेट एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस। क्या बात है, रिटर्न ए REPENATE। बहुत अच्छा लग रहा है, ये आंसर्स कितने अच्छे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 essential fatty acids. Name 3 essential fatty acids. याद है, अब पेपर को ट्राई नहीं, बहुत घूम लिया सारे रिश्तेदार। फर्स्ट इज लिनोलिक एसिड, फर्स्ट इज लिनोलिक LINOLEIC लिनोलिक एसिड। सेकंड इज लिनोलेनिक एसिड, linolenic acid, and third is arachidonic acid, ARACHIDONIC, arachidonic acids. Why starch and glycogen are more suitable as storage product? Why starch and glycogen are more suitable as storage product than glucose? क्योंकि ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और लेस बल्की होते हैं। बिल्कुल सही, they are occupying less space and less bulky, and whenever needed they can be hydrolyzed into glucose. Whenever needed they can be hydrolyzed to glucose. उसके बाद नेक्स्ट को बचा, what are globular proteins? What are globular proteins? They are rounded proteins. They are rounded proteins. And the well-known example is egg albumin. क्योंकि ये टर्शरी और क्वाटरनरी फोल्डिंग जो है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स की उनसे बनते हैं। well-known example is egg albumin. Next, give example of homopolysaccharide. पहले heteropolysaccharide. Give example of homopolysaccharide. Answer is carbohydrate molecule cellulose. It is a homopolysaccharide. Carbohydrate molecule cellulose is a homopolysaccharide. Name the fibrous protein. Name the fibrous protein. Keratin. बात है, मजा आ रहा है, आंसर सुन के बहुत मजा आ रहा है कि ये सेटिंग वाला काम चल रहा है, पता चल जाता है कि मस्ट गो फॉर इट। जितना आपको फिर बार बार बोल रही हूँ कि फुल में जून जुलाई अगस्त सितंबर में पहुंच, तो ये काफी 4 महीने मतलब ऐसे ऐसा बात है। और बड़ा इस
इसको एंजॉय करने के लिए पहले ही पेपर को इतना अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है duplication of DNA is called as shabash replication. Duplication of DNA is called as replication. इसके बाद tryptophan takes part in the formation of tryptophan takes part in the formation of किसकी formation में अपना रोल प्ले करते हैं tryptophan किया हुआ है अमीनो एसिड्स। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि बहुत बार आता है विटामिन निकोटिनामाइड के साथ नहीं है ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट behave as what behave as a dipolar ion? Why does water behave as a dipolar ion? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन के लिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास आती है हाइड्रोजन। It has electronegativity on oxygen and electropositivity on hydrogen atoms. उसके बाद बचा हमारे पास नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। मुझे फिर बाद में ये होगा कि मैंने नहीं कर पाया मैंने भूल गई। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है नेम द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। नेम द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब बच्चे याद आ रहा है मेरे पास। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। वो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बताया था एंड्रयू। वो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी था। अब फिजियोलॉजी आ गई ना स्टीफन हेल। स्टीफन हेल is known as father of plant physiology.
recognized, star दो इस क्वेश्चन को, who first recognized the importance of chlorophyll for photosynthesis? Who first recognized the importance of chlorophyll for photosynthesis? The answer is Dutrochet. Answer is Dutrochet. Next. Who gave red rock effect? Very important. Who gave red rock effect? इसमें बताया जाता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है that drops the red light region in above 689. तो आंसर इज एमर्सन. इसको एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहा जाता है. एमर्सन. What is the question? What is the characteristic anatomical feature? What is the characteristic anatomical feature of C4 plants? क्या? अरे क्या बात है, इनके मेसोफिल सेल्स में पाई जाती है. शाबाश, मजा आ गया. ट्रेंड्स एनाटॉमी. अब अगले मेरे को इतना भी बता दो कि C4 साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? Hatch and slash cycle. C4 cycle is also called as hatch and slash cycle. और यहीं पे अब गाड़ी मेरी अटक गई. Name the first stable compound found in C4 cycle. अरे मजा आ गया आज तक सच में. OAA. वाह. oxaloacetic acid. And name the first stable compound found in C3 cycle. PGA. phosphoglyceric है. PEP तो आता है सेल रेस्पिरेशन में मिक्स हो गया. ये PGA phosphoglyceric acid. शाबाश. अपने निशान थोड़ी सी जेलस फील करके जाना तभी पढ़ो. जेलस करके पढ़ाई. PGA फॉस्फो ये वो है जिसके कुत्ते बहुत बिना पढ़े ही सारे क्वेश्चन आपने. क्या बात है. बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हाइपोथेटिकल आंसर के लास्ट में होते हैं. So next question is what is the technique of photosynthesis? क्योंकि वो सोलर एनर्जी को ट्रैक करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. It traps solar energy and converts into chemical energy. Write down any two important functions of carotenoid pigments. Two main functions. पहला है absorb light energy and then converts into, बिल्कुल सही बोल रहे हो, and then converts into chlorophyll
so as to use in photosynthesis. So as to use in photosynthesis. Next. What is the another name of Kelvin cycle? What is the another name of Kelvin cycle? What is the another name of Kelvin cycle? अपनी बोलो आसपास केल्विन के लोग केल्विन साइकिल कहते हैं पर नहीं साइंटिस्ट के नाम प्राची सोचते रहना रिडक्टिव पेंटोज पाथवे ठीक है मान लिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये मत सोचना कि हमें नहीं आता उसको आता है आप अपने में मास्टर reductive pentose pathway. What is the another name given to membrane of thylakoids? What is the another name given to the membranes of thylakoids? बात भी बोलो मुझे आज सच में बहुत खुशी है कि लाभ लॉजन के दो बच्चे और आपको पता है कि मेहनत 2 साल की हुई और 2 साल इनको भी पता है तो कैसे मेरे पास अभी मैं तनकीद करता हूँ सबसे पहले मेरी क्लास 620 के और वो 6 o'clock तलवार से 5 की वो चीज बहुत लंबी और उसके नाना चीज वो बहुत तो उसके माइंड में एक बात बनाई उसके फैमिली में कोई डॉक्टर के माइंड में एक पॉइंट था मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट लेकिन मैं ऑन्कोलॉजिस्ट याद भी याद और जिस दिन वो मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले इस जगह पास आई हम करते मेहनत करनी आईएएस मार्क्स and bachcha membranes of thylakoids are also called as membranes of thylakoids are also called as fret membranes FRET ये thylakoid में grana और stroma जहां पे आता है कंबाइन करके fret membranes FRET fret membranes name the water soluble pigments name the water soluble pigments name the water soluble pigments phycobilins क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन बड़े बड़े are known as the water soluble pigments. Who coined the term cytochrome? Who coined the term cytochrome? Answer is Callan in the year 1925. Next. Name the most abundant enzyme in the world. Shabash, मजा आ गया. Most abundant enzyme in the world is ribitose.
Kelvin cycle का सबसे important part है. Rubisco is known as the most important enzyme in the world. The most abundant. Next. What is the location of NADP reductase enzyme? What is the location of NADP? शाबाश. और प्राची सच में मुझे आज लग रहा है कि ये फिर कोई एक्लियर वाली क्लास है. क्वेश्चंस के आंसर्स और एक्लियर्स. That is trauma side of the membrane. Very good. Excellent. बिल्कुल सही. Next. What is the another name of light reaction? Photochemical phase. Very good. जिसमें लाइट एब्जॉर्प्शन आ जाती है, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज आ जाता है. What is plastidome? What is plastidome? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स का रोल है, तो प्लास्टिड कॉम्प्लेक्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. प्लास्टिड कॉम्प्लेक्स of a cell is called as plastidome. Which wavelength is least absorbed and also least effective? Which wavelength is least absorbed and also least effective? कौन सी वेवलेंथ जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब और लीस्ट ऑरेंज वेवलेंथ 5 highest orange wavelength 556 to 647 nanometer. Five six four six 47 nanometer. Next. These are three stages. Name the three stages present in Kelvin cycle. बहुत इंपॉर्टेंट. शाबाश
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिजनरेशन, जहां पे आरयूपीपी होती है। ध्यान से सुन जाओ, ये वही है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, जहां पे आरयूपीपी की राइबोस बाइफॉस्फेट फिर रीजनरेट होता है। नेक्स्ट, name the first table, name the first table compound found in carboxylation। ये स्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेशन में जो हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइप का होता है, शॉर्ट स्टेबल नहीं होता है और इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट, name the most abundant photosynthetic organism except in pigment containing bacteria। Name the most abundant chlorophyll pigment in all the photosynthetic organisms except in pigment containing bacteria, that is chlorophyll A। ATP synthesis takes place in which pigment or in which cell organism? ATP synthesis takes place in which cell organism? Chloroplast। अब पहले का आंसर मैंने बता दिया था, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, what is photosystem? PS1 और PS2 की बात करते हैं, और PS1 जो हमारे पास है हम कहते हैं साइक्लिक है, दोबारा कौन जाता है, और PS2 नॉन साइक्लिक होता है, वो अपनी एनर्जी नहीं पे। Photosystem, they are pigment systems for trapping light energy. What is what is the color of leaf kept in the dark? Why is the color of leaf kept in the dark? Frequently yellow or pale green. And what pigment? And what pigment do you think is more stable?
And what pigment do you think is more stable? बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सुनो. Why is the color of a leaf kept in the dark frequently yellow or pale green? And which pigment do you think is more stable? कौन सी pigment more stable? Carotenoid pigments. Carotenoid pigments as compared to chlorophyll. तभी उनके लेस होने से जो है कैरोटीनॉइड सिस्टम के लेस होने से जो है वो पेल और तो बच्चा carotenoid pigments is more stable as compared to chlorophyll क्योंकि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है दे आर द स्टेबल वन और क्लोरोफिल में तो कह सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है इसमें बहुत सारे पार्ट अपना रोल साथ में प्ले कर रहे हैं इसमें हमारे पास स्ट्रोमा आता है ग्रैना आता है एवरी पार्ट उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन which metal ion is the constituent of chlorophyll which metal ion आज सच में मुझे लगा और आपके कारण मैंने अपनी which metal ion is the constituent of chlorophyll? Answer is magnesium. फिर अगला क्वेश्चन है chemosynthetic bacteria they obtain energy from किससे लेते हैं chemosynthetic bacteria प्लस वन के किंगडम मॉडल में जहां पे आपने क्रॉस पढ़े हमारे पास इंफ्रारेड रेज नेक्स्ट क्वेश्चन what is the major role of carotenoid what is the major role of carotenoid पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्ट्स द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन in chloroplast which nucleic acid in chloroplast which nucleic acid act as genetic material chloroplast which nucleic acid act as genetic material
संजीवनी भी बहुत बड़ी और डीएनए तो क्लास में जो डीएनए है दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने आपको बहुत कुछ और आपने आज बाकी सारा पढ़ना, टेस्ट मिस नहीं करना, बाकी सब कुछ मिस कर दो, क्योंकि वो जो आपको 5 असाइनमेंट्स हो रहे हैं वो क्लबिंग करके जो आपने 90 क्वेश्चन करने हैं दैट इज द मेन पार्ट। और वो 90 क्वेश्चन आपकी वैल्यू 90 पहले 90 तक 180 क्वेश्चन तो आपने क्रैक कर और वो आपके लिए बहुत मैटर है। आपका टेस्ट स्टार्ट है और आपने टेस्ट को मुझे अच्छा लगा आज और श्योरली मैं आज जरूर तो मैसेज आ आज बहुत अच्छा दिखा दो बच्चे और